Okay guys, so this is 26th of January. So we are gonna be recapping today's price action on indices, but before that, I would just have a look at gold to answer a doubt of a person in the server, and that would take very few minutes. And after that, we would recap today's price action on indices. Gold, let us say from December, you said past times. I do not know exact date. December onwards, this I could thought next day. This is something I could thought I could long as well. Actionable framework went lower. Sorry, did go the previous day. This is something I could use to thought. जिस भाई रास्ते में आ रहा है उसको फाड़ के जाए है ना. Previous जलों पर फाड़ नहीं पाया. And this is something that I wouldn't like Yes, to sir. be Yes. participating within. This would be a more of a range to me. So no participation, no participation, no. Once it reaches through this, again a relevant swing, you know what to do. Could have been framed, and if this holds, then you could frame till there. Still holding, but I would say lacking clarity for both sides. Yes, got a previous zero manipulation at least. I would be comfortable using this. I would be comfortable seeing this getting swept again, but yeah, I would prefer long. Good. Now keep considering that and do not reject this. I wouldn't want to see this getting rejected. Few conditions I would assume, or I would desperately want a relevant string to get displaced through based on the conviction, based on the recent or higher time frame framework. Okay, rejects, but I would want this to be a retracement and not be a reversal. And retracement protocol, good Joe's previous day low swept, now good to go higher again. रास्ते में ये आ रहा है, इसको फाड़ के जाओ, good to go. इतना भी नहीं फाड़ना था. Okay, no, nice. So within December only, how many opportunities? 1, 2, 3, 4, maybe 5, 6. I do not know about this day. 7, 8, maybe. So you can consider both these days as 9. And new week open, previous week set the framework for retracement to expansion. So one more day, yes, both could be framed. I could be looking for framing another day of continuation. Previous day low, day high rejects it. So yeah, another day I could consider this as a retracement, maybe again shorts, longs higher, else here. This ended up being a retracement. This is what Wednesday, Thursday, Friday, Thursday bank holiday. Thursday कब से बैंक हॉलीडे होने लगा? Okay, sorry. ट्यूसडे के बाद सीधे थर्सडे में मार भी चलाऊंगा. 24 छुट्टी नहीं थी. ट्यूसडे 24. वेडनेसडे. अच्छा वेडनेसडे ही तो वो था. ठीक है, तो फ्राइडे तो दो तो देंगे अभी. नहीं सीधे न्यू वीक. I can't say I could have predicted that, so maybe not possible. If within the current daily range, if I could have figured out that this move then lower, then maybe previous day low, I do not think I would have framed it all the way till here in the same day. In hindsight, we can say yes, but we have to stay real. Next, this is a point of time I would be sidelined for a bit and not try to frame immediately the next day. Now my participation could arise. I could frame the same day, I could frame the next day, longs preferably.
At least this, yes. Now this, I want this to hold. Yes, I want this to hold, please. So either sweep previous day of this or either hold this small little range and directly go there. ये क्या सीधे jump मार के जाते हैं. Now this is retracement to expansion, just one day of expansion. Expand through this and I could trade another day of continuation. Yes, I could trade another day of continuation, expand through this. Not able to expand through this, instead rejected this, so I could trade back inside because of the very small wick. The level of relevance. If this gets displaced through you long, if this gets rejected with this much willingness, you short. Now I could frame both ways. Long short both. Previous low would be level of relevance. Directly from there as well. Yes, long. This is too good. Long. Displace through this. I would long next day as well. And now I would think expansion comes back inside, starts expanding away, continuation signature away, so not reversing. So I won't think just this, I would think past this. Getting my point? Because this move was just to tell it is not reversing from here, going away from there. So I wouldn't think of it to reverse from there again. This is just coming in the way. Actual objective is higher, which is higher than this. This was just to tell I am not reversing from here. Hope you get my point. Good, 1 2 3. Now I would prefer shorting at least one day. Good, shorts worked. Now I could long directly, I could long from here, I could short, but I wouldn't prefer due to this framework which is built over this. So I would want this to be displaced through rather than rejected. If this gets rejected, it is what it is. Nice long still previous day. Good Josh. Again I can frame longs. I could frame shorts as well, but I would prefer long. Expansion, retracement, expansion. Previous day high, I want it to get rejected, displaced through, not rejected, displaced through this. Didn't even reach for previous day highs, so I mean you could have used this to short till previous day low. Now I can look to short, I can look to long. Tell me if this is an SMT or not. Well यार मैं एक तो 24 और पे क्यों 13 Jan. Nope. Nope. So I could short, I could long as well. Daily profile long. This I would prefer longing because still relevance is over this high, and the way this is rejecting and from the best point longs, previous day high would be too short, I would say, just this much. So yes, 37 if yes. Okay. So again, not reversing from the all-time highs. So yeah, it doesn't want to stop just at the second high, it wants to displace through. Displace means either reverse means come and go lower, not able to reverse from there, that means the expansion to ranging small range just had broke the range. Now expect large ranges. That is what I am saying. I keep saying large ranges to then range bound. Once it breaks through and you get the information, then again expect large ranges. Same here.
large ranges, then range bound. Once it breaks, है ना, expect large ranges again, है ना. So yes, displays through previous day high, one more day of continuation. I would love to frame displays through previous day again. I would prefer shorting now. Reject previous day high. Didn't reject. I wouldn't. ये मैंने दिल देख. अरे हेम भाई, आपने लॉन्ग लिया था इस दिन? हेम भाई है ही नहीं बंदा. क्रिसमस लिया पर हेम भाई ने शायद, क्योंकि मेरे को ये डेली चार्ट देखा देखा लग रहा है ना. डेली चार्ट से तो यस, ये लुक्स लाइक आई वुड प्रेफर शॉर्ट्स. 100% कंफर्टेबल लॉन्ग्स में भी नहीं होगा. ओम भाई शूटर है, ओम भाई को क्या ही बोलूँ मैं. हाँ ओम भाई बता रहे थे इंट्राडे हाई तक M15 एंट्री बहुत अच्छी थी, नहीं तो मैं भी शॉर्ट. हाँ, और अब तो मैं शॉर्ट ही सोचूंगा. मे बी डायरेक्टली फ्रॉम देयर, either from previous day, both works, at least till current low of the week. Kal, how many days you want, brother? You said wasn't, you weren't able to. Your doubt clear now. I mean, lower time frame could be a mess. I do not know, but daily chart not so bad. Gold, I would say, is one pair that would always give you opportunities off of the daily chart. Yes. लोअर टाइम फ्रेम अपन भूल भी गया होगा शायद गोल्ड को. है जस भाई, एक समझ जाए वही बड़ा है. ओके लेट्स गेट बैक. क्या लिख रहा है भाई, जल्दी लिखो. इन दिस एक. yes Yes, yes, sir. Yes, sir. very Very. clear. Yes, Lower very. time frame messy, but daily seems very clear now. Okay, good. Thank you for the walkthrough. Okay, reversal of a relevant swing, expansion to then new phase, which is not exactly expansion. I wouldn't be comfortable trading away from these, so I would want a new phase. New phase happens, I would definitely or desperately want it to be here. Retracement. Oh, ये तो fair value gap ही, वो मैंने देखी नहीं. वही तो leave fair value gap, just highs lows are enough. Not exactly leave, but got my point. Fair value gaps is nothing but just highs and lows. Lows manipulation and price is already in one-sided quality framework to be in a bullish order flow. So yes, average daily range, yes, supports it like here till here. In these conditions, जहाँ पे ऐसा क्वालिटी फ्रेमवर्क हो और इंट्राडे रेंज अगर एवरेज डेली रेंज को ऑफ करके देखो, looks properly good, or previously there was no expansion, you can see this is ranging, है ना. Then you can expect much large range than this. Obviously expansion, new phase, consolidation, manipulation to then expansion, properly valid. लाइक एक क्वालिटी फ्रेमवर्क वाले एक्सपेंशन दिन पे आप एवरेज डेली रेंज छोड़ दो, इतना मूव तो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट, है ना. और जब रेंज लो, मैनिपुलेशन रेंज आई, सेम कर ही सकते हो. यस, एवरेज डेली रेंज डिडंट सपोर्ट इट, बट दिस इज अ सिचुएशनल फ्रेमवर्क. कंपेयर करो, जिस दिन ने बुलिश एक्चुअली जाना था इस फ्रेमवर्क में वो गया था. यस, तो मोर सो बेस्ड ऑन द रीसेंट कंडीशंस. रोज नहीं मैं एवरेज डेली रेंज वाला रूल वायलेट करूंगा, बट क्वालिटी फ्रेमवर्क इस दिन से बना है ना. क्या तब से एक्चुअली में एक भी दिन एक्सपेंशन क्वालिटी वाला हुआ? नहीं, ये भी था नहीं था, ये भी था नहीं था. तो मतलब एक्चुअल क्वालिटी वाला एक्सपेंशन दिन इस फ्रेमवर्क में until the draw is met would be obviously more than these ranges are, है ना. You can take this for example, this one.
नॉट एग्जैक्टली इतनी ही नहीं डिमांड करो, पर यू कैन टेक दिस एज ए एग्जांपल। दिस इज स्टिल लेस है ना। रेंज आई तक तो ऑब्वियसली नहीं, प्रीवियस डे आई इजीली। प्रीवियस डे आई समवट 480। 480 इसका बॉडी क्लोजर तक है, तो यस क्वालिटी एक्सपेंशन डे। और अगर इसका एक गो वाला देखें एक्सपेंशन, स्टिल अराउंड 480 है ना। और ये सारा एक गो में नहीं है वैसे भी, ये एक लेग यहाँ से यहाँ तक की है ना। 263, यस वी कैन एक्सपेक्ट है ना। एक लेग इसकी अगली भी देख लेते हैं। ये तो था ही फाड़ो फाड़ो गेम। इसकी 263 से ज़्यादा तो सिर्फ यहीं तक है, पूरी को तो डबल है 263 के। और प्रॉप यार मैं मार भी चला दूंगा। वाई वी कांट। रेंज लो मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और प्रॉपर इनफ रेंज्ड थिक रिट्रेसमेंट, देन वी कैन एक्सपेक्ट एक्सपेंशन। और वो भी मैं इधर इधर तुक्का नहीं मार रहा हूँ ना। इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग फ्रेमवर्क है, जिसमें अच्छा उसमें मैं इधर इधर रिस्क ले सकता हूँ। यस दिस ऑब्वियसली है। लो टाइम फ्रेम रेंज देख के बोलो क्या इससे बड़ी क्वालिटी एक्सपेंशन डे इससे बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, जो कि क्वालिटी एक्सपेंशन डे महीने में होते ही 3-4 हैं, तो यस। और एक रीज़न था फिर तब मैं M1 पे भी गया। नॉर्मली यू इवन आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम आई ट्रेडेड M1। यस द बेस्ट आई वुड से टुडे। डेली चार्ट daily swing ahead, clearly expansion to consolidation, breaks through one end, usually rejects. US framework is already a quality manipulation framework from where we withdraw this, and consolidation already confluencing this, consolidation being continuation signature। 100%। आदि भाई को मैंने बोला था मैं मंडे को पक्का पार्टिसिपेट करूंगा। मेरे को क्या पता था ये गैप डाउन करेंगे यहाँ पे। मेरे को था कि इसको फाड़ जाओ, मैं डायरेक्ट रेंज आई तक लूंगा, क्योंकि दिस इज व्हाट आई वांट। एक्सपेंशन से पहले कंसोलिडेशन, तो मैं बहुत खुशी से एक्सपेंशन फ्रेम करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट फेज कैन एक्चुअली बी अ गुड क्वालिटी एक्सपेंशन एंड द प्रीवियस फेज was consolidation। Simple, small ranges, large ranges, small ranges, large ranges, simple cycle again and again, large to then small and again large। जैसे लंदन kind of ये retracement थी, not expansion। I can comfortably trade the next session as expansion। पर इसमें मैं बहुत खुश होता हूँ जब रेंजिंग होता है। जैसे डेली वायम का देखो, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश था मैं, आपने देखा था कि रेंजिंग हो रही है, क्योंकि जब वो टूटेगी तब एक दो क्वालिटी दिन तो मेरे को मिलेंगे वैसा सीन। हालांकि आज नहीं मिला, उस दिन भी नहीं मिला, एक तो मिल ही जाएगा, आई स्टिल बिलीव। वायम पे रेंज और अच्छी दिख रही है, प्रॉपर है ना। क्लियर रेंज है, रेंज लो। तो आई वॉज जस्ट ऑन अ वेटिंग मोड। एक सेकेंड, क्या इसी दिन हिम भाई ने डाउट पूछा है ना, लॉन्ग लिया था। अब मैं देख ही नहीं रहा था इस एसेट पे, अब मैं कैसे था, मैंने तो सीधे इसको रेंज हाई रेंज में मार्क करा हुआ है। देखना पड़ेगा फ्राइडे का बाद में, फिर फ्राइडे का भी रिकैप रखवा ही लिया लोगों ने, मतलब ये डाउट। ओके, तो ईएस गुड फ्रेमवर्क, डायरेक्टली मैनिपुलेट्स एंड नो अपोजिंग साइड फ्रेमवर्क है ना। सिंपली प्रीवियस फ्रेमवर्क भी सपोर्ट यही कर रहा है, और ड्रॉ एक्चुअल ये नहीं है, ये है, और इसी की सपोर्टिंग में मैनिपुलेशन नहीं है, तो वेरी रेयर दैट दिस मच वन साइडेड फ्रेमवर्क इज देयर। तो मैं आई वुडेंट बी बॉदर्ड अबाउट these eyes in the way, just simply this simple manipulation। 100% I am one-sided biased। So yes, Asia reverses, London retraces, New York I would expect expansion, है ना। Plus if I align overall you can see why not YM and why NQ, yes YM
I have previously said as well, consider each 4 hour, you can, not exactly, but you can, each 4 hour as an individual session. All sessions expanding prior New York, I wouldn't be comfortable in New York, framing expansion away from it, expansion to expansion. Compare NQES, one session has retraced prior to New York, London, है ना? Previous low took previous low. You can expect New York expansion and be comfortable trading I can be comfortable sitting within it to the extreme draw. ठीक. अब वो ऑर्ली पे एक एसएमटी थी, उसको मानो नहीं मानो, ये मैंने भी फ्रेम करने के बाद देखी, पर वही है ना, कॉम्प्लेक्स करना पड़े तो इतनी जरूरत नहीं, सिंपल मैंने 4 और देखा, मैंने कहा ये दोनों ये नहीं, हालांकि ऑर्ली लुक सेम है ना, सी है। और यस, ये फ्रेमवर्क भी ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए मेरे को आई डिडंट इवन नीड टू सी लाइक डिस्प्लेसमेंट थ्रू दिस, कि अगर बेरिश जाना था तो मेरे लिए इसको होल्ड करके यहीं से जाओ, वो तो मैं बेरिश वैसे भी नहीं चाहूँगा। इस दिन बेरिश नहीं फ्रेम करा मैंने, इस दिन नहीं करा, इस दिन क्यों करूँगा, जब तो एटलीस्ट मतलब रेंज लो भी मैनिपुलेट हो गया, इतने क्वालिटी फ्रेम वो भी मैं बिल्कुल बात है, बट स्टिल इफ़ वी थिंक अबाउट, जाना है तो यहीं से जाना, दैट मच गुड। इफ दिस इज फेलिंग तो नहीं, मैं नहीं वेट करूँगा कि फिर मतलब हर एक हाई का ही वेट करो, अच्छा इसका भी वेट कर लो, फिर अच्छा इसका भी वेट कर लो, है ना। कन्विक्शन डिपेंड करता है, जहाँ पे कन्विक्शन कम वहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच, जहाँ पे कन्विक्शन ज़्यादा वहाँ पे अग्रेसिव। व्यू दिस वर्सेस, मतलब एनक्यू में भी कन्विक्शन ज़्यादा, पर रेंज में देखो, व्यू दिस, ये हाई ये है, और ये हाई ये है, ES थोड़ा क्लियर है ना, इनकी तरफ मदद किया जा सकता है। एनक्यू बोल रहा है इस आई कैन स्टिल बी ट्रेडेड अवे फ्रॉम दिस, ES तो कह रहा है आई कांट बी ट्रेडेड अवे फ्रॉम दिस, तो ES में आई वॉज बिट कॉन्फिडेंट इवन विदाउट हायर दैट गेटिंग रीच्ड this retracement prior, you know, previous H4 लो लिया इसने, and a protected swing within the New York session, good enough ranged, है ना, clear protected swing, proper enough ranged opposing leg, clear closer to, I do not need more in this, so good, everything in the head starts from the daily, your daily analysis is right, you would automatically pick the right asset most of the time. This too simple position, don't need to complex it, है ना, too simple result, but I missed this as I was journaling, and that has been recorded as well. I saw it around this, I saw that two good framework I have missed, then I saw if ES aligns for somewhat and NQ aligns, I can still frame NQ to previous day. That has been also recorded in that part 3 session. So around here, don't confuse yourself with much lower time frame when you do not get an idea. Switch back to higher time frame again if you want clarity. Switch back, simply. NQ still looks like okay, this could be used to trade away from, है ना, ऐसे ऐसे, तो हाँ, I demanded a bit more conservative approach on this. Yes, I was aggressive. So yeah, NQ displaces through this, I am comfortable with targeting previous day. And someone was asking me that Adi bhai, that lagging asset thing, that isn't very necessary when I can even frame NQ on its own. इतना कन्विक्शन फ्रेमवर्क, मतलब यहाँ तो बेरिश जाए यहाँ से, यहाँ तो नहीं जा रहा था बुलिश, हाँ वो तो ES जस्ट थोड़ा सा बुलिश जा रहा है, तो 1-2 सेकंड पहले पहुंच गए, या तो ये जा रहा है यहाँ पे, या तो ये नहीं जा रहा है, यहाँ पे आके नहीं रुक रहा है, या तो ये बेरिश जा रहा है, या तो ये बुलिश होके यहाँ जा रहा है, वैसा सीन है, क्योंकि ये देख लो ना, और क्या
क्वालिटी फ्रेमवर्क वाले रेंज से पिछला कंपेयर करो. यस, मतलब वेरी रेयर frameworks like these happen. Sub, I do try to like take advantage of them. Then it expands through. Like I marked this while it was printing. Okay, 9:30. Prior to 9:30 it was it, है ना? हाँ, 9:15. Like it has hit this now. This wasn't even hit. This was forming. This hasn't reached here. So I said to myself, okay, I view this as a protected swing. The two relevant swing for me would be this and this. Reject this, displays through this, I would trade till here. Reject this, I wouldn't trade at all. Simply one relevant. Displays through this, then I would see this going here and I wouldn't be comfortable at all to frame thereafter. I would rather skip. But I saw NQ came and then started displacing, rejected this, displacing through this as well. So yeah, I could consider this getting breakthrough. And when this is a quality framework, we can switch time frames lower when there is no opposing side framework. No, क्या बोलते हैं उसको, conflicting bias. Just one sided, one directional quality bias. No if but scenes, है ना? And price in is in a hurry, which we can see immediately after 9:30. Then we can switch time frames lower, है ना? Then I switch to M1. Previous day EQ was somewhere here. If post 9:30 price wanted to go lower, it shouldn't have rejected a low above it. It should have displayed a low or rejected a high. Then I missed this again while journaling, and when I saw this had immediately expanded up, then I thought, okay, I missed two good frameworks which were presented today. To my luck, it came back, and I didn't saw this within this candle, just almost the next candle. So I immediately executed within this candle, and then with my stop here. And once what? And why this? Like not something as too small ranged, and plus it is a clear manipulation of a low, plus NQ, clear manipulation of a low, rejecting through a most relevant high, like below this. And this is something I could consider enough range. See, now can you see enough range, huh? And rejecting a low even while 9:30 has rejected and displaced through half the day as well, and displacing through it. Yes, I can see it holding with that quality high time frame framework, one sided, one direction. So yes, very rare. And plus I saw this not closing all the way through, rejecting. So yeah, I still took it within the next candle. This may stop there, not there. I trailed to there, yes, once it had closed through this and expanded a bit much higher. I had, when it closed to say, I had trailed there, yes. And then 9:45 open was here. This is 9:30's M15 candle. I was separated. Alt V. So you can see this placed within enough range within the M15 candle. If this is the candle's range, this is the whole candle's range. This is placed and popped a bit below, not too high within the candle. If the framework needs to hold, or I might project this out here and show you this on the M15. Like this is something you can
Expect price not returning back. If price is displacing this much through high of the day and previous day has the draw, you wouldn't want us to come all the way back here when all the draw is set to go till there. All the framework is set, like, which makes much more sense here. Go this much, 28 something points, or go 50 points. Even while quality framework on our side, displacing through EQ. भाई कितना accurate mark करा मैंने वाकई. So yes, I mean, I didn't make it complex for myself. I was journaling and saw this, immediately executed. No second thoughts. That's why I was multitasking at the same time. But had it been a conflicting bias based position, I wouldn't have preferred to frame today at all. Now I wanted it to go from there itself, and it held 945 open low, and then I trailed here. My stop was still there, and then it reached there. This was my execution. After this candle, ideally it should have been here, but I was late. Top was here as I said, and 45 open low, then higher. Expecting each of this well enough range to opposing candle to then Tuesday high. And these are the only two setups. Not the only two. RTY had quality framework to go lower. I can talk about that. Not much time would be needed. Just I love it when there is clear one-sided framework for an asset, so I don't have to think both ways. That is when you can be very straightforward with your decisions. NQ is clear, है ना? ES is clear it as well. And why not YM? And why not I am concerned much about YM? That expansion to new phase type thing, है ना? Already cleared. And now simply RTY. Just see the daily chart. It rejecting. And with this much willingness, I would rather short than long. Hourly chart. The best place it could use to go lower. Rejects that. Too good. Not all the way to low of the day, but at least you can frame it till the relevant swing. Yes. 9:30 forms the reversal. 10 a.m. expands away from it. Good job. I mean, if you're still in a position, don't make the mistake of trailing your stop to 11 a.m.'s high. This is 9:30 making the reversal. 10 a.m. forming the continuation. Reversing high set prior to 10 a.m. If this is a quality date to go lower, what should 10 a.m. do? And away from the high which is supposed to stay protected, or the high which put in the reversal, not expand towards it, expand away. 10 a.m. does exactly that, expanding away from it. And this framework could be used to short. If this is wide enough range and you missed that M4 M3, justified, anybody can, I too can. This M5 looks too good that okay, why switch time frames, why care to switch time frame when we can just use a clear easily visible series. Human tendency, we can. So okay, if you missed, still quality framework, still draw is still open. This now, this isn't something I would want you to miss, है ना? Simply too clear. 10:30 open high, clear closure. This isn't something you're supposed to miss. I mean, not 1.5 hour till there, but quality framework, you can go break even at this low and at least target lower. Or if 1.5 hour till there, then we would need to place a limit
Let's see if this hits prior to us getting executed. I wouldn't execute. Nope, either. And I do not think I would be concerned much about this load, as this isn't what is supposed to be the main objective. So yeah, would take the market order normally as I would 1.5 hour, and I do think I would still stay in this position. Messed stop there, and I do think I could have possibly trailed there or break even once this happens, and my partials there. 1.2 or I do think it may not reach, may not have reached, may have not 1.2, 1 to 2 hour. Still, okay, nice. So this is something you shouldn't be much worried about. Expansion to consolidation. So yeah, eventually it needs to hit this, and if it hits this, your 2 hour would get hit as well. Just don't be aggressive with trailing your stop loss. You do not know how deep it can go to manipulate the range, or even if it goes or not. So have enough space, give your stop loss enough room. This is something which I would consider valid. Not try to force it here. Let it actually displace away from there. Do not try to predict it early that okay, this would be manipulation, this should go from here. It could take one more candle and then go. Don't make the silly mistake. I do not think I would frame till over the day the same. Day. Nice. So, risk reward based position. Framework was good, yes, indeed. I would hold on the framework till there tomorrow as well. Would roll over the bias, and preferably I would want this height to stay intact. Monday reversal to then Tuesday Monday intra-week reversal, not reversal exactly. Tuesday continuation based position. Quality framework. Any doubts? See, one-sided days, you do not need to complex much, है ना? I recapped 4 assets and it took just few minutes. Then it's normally take, है ना? Quality framework. I mean, ideally your approach should be just waiting for these days. Then you should be in would be in a better mental state. That demands having clear clarity of what you won't frame and what you would frame, and clearly rejecting what you aren't supposed to frame, so that when the actual model presents itself, you don't hesitate and you know what to let go without you don't actually get entitled to moves that you need to frame. No, present the line, let it go. A good opportunity would always come. Just be okay with waiting. And I love waiting, to be honest. Not waiting in the sense, but I love waiting for the right setup. I love coming every day and showing up. If it aligns, I would take. If it doesn't, I would demand what my standards for entries are. If those are met, I would take. If those aren't met, I wouldn't. Don't try to think, okay, I may switch to low time frame. I could think complex, I could think advanced and force entry. No, that isn't worth the energy and worth the rewards it would give and the probabilities it has. More advanced doesn't mean better results. I do go advanced because sometimes I may have to explain complex price actions, but in my positions, you would always see the simplest positions, as you would only find consistency within your journey when you start to frame the easily visual ideas and not force the complex ones. Complex ones would drain you out, and those won't be sustainable. Easily visual ideas suck out consistency from you and make it sustainable approach. Any doubts?
सर जी, लाइक सी दिस, टू क्लीन ऑफ एन आइडिया है ना, टू ऑब्वियस, जस्ट फ्रेम द टू ऑब्वियस सेटअप्स, if it doesn't align, don't frame it, two obvious setups, है ना, I mean the waiting period may increase so that you actually know when is this your battlefield and when this is not, so you actually get to know when to be conservative and when to get aggressive. I get aggressive on the days I know I am supposed to frame, and I stay conservative when I know I am not supposed to force phases market cycles, है ना, like this is a too good of a framework to miss upon until this is reached, so I wouldn't leave a chance, simply too good of a framework to be left. This day I missed due to being late, okay, next day this was why I framed longs 30 minutes, next day to it, okay, I missed again, that was day for RTY shorts, still didn't miss, and next day NQ longs and ES longs are what I missed, but even while being too busy with my personal work from last 3 4 days, one day is what I can consider with I missed the quality play. Previous day 22nd Jan I framed Ram. This day, okay, 2 days you can say, but I actually showed up to the charts at least. Was late, but so today also I framed, and do not, I won't leave a chance to frame tomorrow as well. जस भाई रास्ते में आ रहा है ना, क्या करा जाए इसका? रिएक्शन देखेंगे सर। रिएक्शन नहीं देंगे इसको, बोलो फाड़ के जाओ डिस्प्लेस थ्रू। है ना, इसको भी बोलो फाड़ के जाओ। क्या कल ही आप ले सकते हो एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव तक सर जी? ले सकते हैं सर। जी सर जी, फुल पावर। अब मेरे को रिकैप वाला लिख के जाऊंगा मेरे को, क्योंकि भाई डाउट्स वाले में ये फॉरवर्ड मार दो, इधर गुम हो जाएगा। मेरे को फ्राइडे का भी करना पड़ेगा क्योंकि उसमें एम बाय का डाउट है। आपका भी उसी में ही है? नहीं, आपका ट्यूसडे है। आज रिकैप क्या होता है भाई? कुछ भी? ठीक है गाइस, एनी डाउट्स? आदि भाई क्लियर है? जस भाई जी? यस सर। बाकी सबको? आदि भाई शूटर सिंह क्लियर है आपको? ठीक है सर जी, अपन चलता है फिर। टाइम कितना हुआ? 11 से पहले ना 3 सेशन रिकॉर्ड करे मैंने आज वाले। करे तो 4 है, पर एक को, 2 को एक ही में डाल दिया। जो इसके पहले 2 करे ना वो बहुत फाड़ है, पार्ट 2 और पार्ट 3, क्योंकि उसमें मैं डिस्कॉर्ड पे नहीं था। डिस्कॉर्ड पे होता हूँ तो मेरे को होता है सेशन छोटे रखूँ, पर मेरे को अपना नोशन जनरल इन डेप्थ पे करना था, मेरे को कोई कसर नहीं छोड़नी थी। तो एक रीज़न था मैंने डिस्कॉर्ड पे सेशन नहीं करा आज पार्ट 2 और पार्ट 3 रिकॉर्ड करने के लिए। वो मैंने अकेले में बैठ के जनरल करा। बीच में मुंबई का फ़ोन आया था, तो आपको मुंबई की आवाज़ दिखेगी, पर कर अकेले ही रहा था मैं। पार्ट 3 में तो बिल्कुल कोई नहीं दिखेगा, 2 में आया था मुंबई का फ़ोन। तो वो है प्रॉपर इन डेप्थ, उसमें मैंने टाइम की तरफ देखा नहीं है, और वही बेनिफिशियल है एक्चुअली। डिस्कॉर्ड पे सेशन करते टाइम में आई एम अ बिट कंजर्वेटिव विद टाइम, लाइक सेशन शुड बी स्मॉल। So yes, but I mean to say is do not miss upon those 2 sessions, part 2 and part 3. If needed, rewatch that part 1 before those two. Too good. In-depth notion का एक एक चप्पा चप्पा दिखाया मैंने, and I do not think I would do it again. So good है। ठीक है भाई, इसको मैं सेट करके मैं भी हो जाता हूँ गैप अर्ली, क्योंकि अगर कल लेट भी हो गया एटलीस्ट मेरा सामान मार्क तो होगा सब।
पता कुछ नहीं होता है। जस भाई आप सोचते होगे हमारे यहाँ शाम में होता है तब भी मैं लेट कैसे हो जाता हूँ, वो मेरे को भी समझ नहीं आया आज तक। सोचते होगे ना कभी कभी आप, सोचते तो हैं सर कई बार। है ना। वो मेरे को भी समझ नहीं आया। मैं सेशन से पहले मस्त फ्री होता हूँ, सेशन टाइम में पता नहीं कैसे यार, मेरे को भी समझ नहीं सर आती। ये क्या सीन है, जब अच्छा फ्रेमवर्क हो तो वो पहले ही पहुंच जाता है जहाँ मेरे पर को पहुंचना होता है सुनाई नहीं दिया ऑलमोस्ट। जस भाई, क्या बोल रहे हो? जब अच्छा फ्रेमवर्क होता है, हम्म। जैसे आया था अच्छा फ्रेमवर्क, तो वो तो एंट्री की बस वो ऑब्जेक्टिव के पास बस पहुंचने वाला ही है 9:30 पर। जस भाई ईएस में मिली, आरटीवाई में मिली, एनक्यू में मिली, और किस में चाहिए आपको? मतलब ईवीएम आपका में कोई मिली ऐसा थी अभी भी जी। डाउट है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मतलब कि अभी आज देखा जब मैंने सुबह, मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर गया। अच्छा, पर वो एनक्यू और ईएस। उसकी नज़र आपको इधर रखनी थी, पर इधर, इधर नहीं, ये गंदा एसेट है। अब इधर की हाँ रेंज जी। आई, रेंज लो। हाँ जी। और इस पे नजर मेरी रखिए नज़र फिर फ्राइडे से सर। थी, क्योंकि मेरे को पता है मैंने इस दिन एक रीज़न से पार्टिसिपेट नहीं करा, दिस इज़ नॉट माई अरीना, दिस इज़ नॉट माई मेटल फील्ड, तो आई शुडंट पुश अगेंस्ट माई प्रोबेबिलिटीज हेयर। आई शुड ट्राई माई प्रोबेबिलिटीज वंस दिस गेट्स रीच इनटू, और वंस दिस गेट्स रीच इनटू, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्राइस बीइंग इन एन एक्सपेंसिव मोड, मतलब एक्सपेंशन वाले में, आर मोर रेयर देन दिस। यहाँ पे प्रिडिक्ट ही कर रहा हूँ मैं, अब एक्सपेंशन में है, अब नहीं है, अब है या अब हो सकती है। जैसे हिम भाई का शायद ये डाउट था कि यहाँ तक गया, यहाँ तक क्यों नहीं गया, क्योंकि यू सिंपली कैनॉट प्रिडिक्ट यहाँ पे कि, क्योंकि विद इन द रेंज you never know when would it reach the extreme of the range। सबसे मेन इजी, लेट इट रीच द एक्सट्रीम ऑफ द रेंज, क्योंकि तब आपको पता होगा तब एक्सपेंशन मोड में आ चुके हैं। हाँ, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यू वुड मिस, बट उस फर्स्ट को फ्रेम करने के लिए जो 4 पे एसएल खाओगे, नॉट वर्थ इट। सो लेट द फर्स्ट मिस, फ्रेम द सेकंड थर्ड, 2 ले लो बस खत्म। जैसे ये अब हुई एक, मैंने तो फर्स्ट में ही ले लिया, आप सीधे बोलो तो, है ना, यस। क्योंकि ये गैप डाउन हुआ था, वो तो चलो हमारा फेवर। जैसे इसमें यू नेवर नो व्हेन डज इट रीच द एक्सट्रीम, दैट वुड बी फोर्सिंग। कंसोलिडेशन में विद इन में वो बस इंटरनल हाइज स्वीप करेगा, इंटरनल लो स्वीप करेगा, इंटरनल लो स्वीप करेगा। यू नेवर नो व्हेन वुड इट रीच द एक्सट्रीम। तो इस दिन मेरी सिंपली पार्टिसिपेशन में नहीं थी, देखा ही नहीं था इस दिन। इस दिन भी नहीं थी, अच्छा एक ही है। इस दिन मेरी वायम पे थी, ठीक है सर जी। और क्योंकि मेरे को पता है दिस इज नॉट माई बैटल फील्ड, जब मेरा बैटल फील्ड आएगा तब मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आई वुडंट ट्राई टू लीव एनीथिंग ऑन द टेबल। वही है कि actually having clarity about your personality, what you want to frame, and actually knowing what is meant for you and what is not meant for you। जानना है सर जी, मतलब एक दिन में नहीं पता चलेगा मेरे को, यस कौन सर। सा एक दिन में पता चला। हाँ, पर वही है, बंदा लगे रहे सब हो जाता है। ठीक है सर जी, यस सर। जैसे आप भी अभी लगे हो तो डे 4 के बाद डे 5 भी आ जाए। ना सर जी। कल बहुत बड़ा दिन था भाई। नहीं, आपके हिसाब से कब तक हो जाएगा? ये भी यार ट्राई करेंगे 1 फेब से पहले मोस्टली 70 से 80% कर दें। मतलब फेब के पहले हफ्ते तक सारा डन? नेक्स्ट वीक तक, हाँ जी। फेब के पहले हफ्ते में अभी 10 दिन से जा पड़े हैं सर, जी। कोशिश करो सर जी, फिर अपना टाइम यहाँ पे दो हाँ उसके जी। बाद। इस पर ही देने के लिए तो उठ गया हूँ आज जल्दी। खुद उठे हो या उठाया गया है? नहीं नहीं, खुद ही उठता हूँ भाई, कोई नहीं उठाता। नहीं, मेरा पूछना फर्ज है ना यार, ऐसे अजम्पशन नहीं नहीं नहीं, ना फर्ज लगा है सकता भाई। मैं। नहीं नहीं, खुद खुद। हाँ जी भाई जी, गुड जोश। आज आपके भाई ने रखा था व्रत, इसलिए अगर सच रीज़न बोलूँ, इसलिए मेरे को आज टाइम मिला है।
तीन चार वीडियोस है नहीं, क्योंकि आज मेरे को डाइट का कोई सोचना ही नहीं था, सिंपल बात, सिर्फ फ्रूट्स पानी फ्रूट्स पानी, वो भी भूल गया था एक टाइम के लिए। बाकी ये भी है ना कि आपको इतना शौक नहीं है खाने पीने भाई का। बहुत है। बहुत है। ये जैसे हम पंजाब वाले खाते हैं वैसा नहीं है ना। मे बी, पर आपके पास मैं रहा कितने दिन था, 3, उसमें आप भी बिजी थे तो इसलिए, नहीं तो हाँ। मेरे घर में मेरे को मेरे खाने पे बहुत वो ताने पड़ते हैं, तो मैं रेयरली, ओम भाई से पूछना, मतलब वहाँ तो चलो मैंने बोला ना जस भाई, आई रेयरली रिकॉर्डिंग चलो डन करता हूँ ना पहले,